सो बूलियंस इसमें ये ट्रू और फॉल्स है, ये आप लोगों को पता है. सो डबल इक्वल पाइथन में अगेन कंपैरिजन भी यूज होता है ट्रू और फॉल्स के लिए, और लेस देन ग्रेटर देन ये आप लोग ऑलरेडी पता है. और इसमें ऐसा जो कुछ भी नहीं है. ऑपरेटर्स यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट देम. सो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. Then we have the modulus as percentage. Then we have double star, that is the exponent, and then we have double slash, which is the floor division. So if I quickly show you guys, so 12 divided by 5, this would give us the integer division, which is the equivalent of saying div of 12 by 5. So ये आपको क्वेश्चन रिटर्न कर देता है without the decimal part. So ये start हो जाएगा. Okay, and then we have, okay, so these are the shortcuts. So यहाँ पे अगर आप pseudo code में देखते थे ना, y is equal to y plus 1. So pseudo code में we can Python we can just write x plus equal to 3. So that would simply mean कि आपने x की current value में 3 ऐड कर देना. Then minus equal to 3, multiply equal to 3, divide equal to 3. So you guys can use this. It's totally up to you. Just exam में अगर आपने time save करना है, hardly save like a couple of seconds. So let's say you have count is 0, and when you say count is equal to count plus 1, that will also increment the count, same as saying count plus equal to 1. So if you print the count, it should be 1 and then it's 2. ओके, इसमें पाइथन में भी बॉड मैथ रूल फॉलो होता है. सो जो प्रायोरिटी है वो आपकी हमेशा जो इनरमोस्ट ब्रैकेट होगी वहां से आपकी प्रायोरिटी शुरू होगी. एंड बॉड मैथ से उसी तरीके से पहले पैरेंथेसिस की जो है वो प्रायोरिटी होगी, देन आपके एक्सपोनेंट्स की, देन प्लस माइनस देन सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड एंड योर डिवीजन एंड मॉडुलस, देन प्लस माइनस, इस तरह से. ओके, देन वी हैव पाइथन लिस्ट. सो लिस्ट के अलावा अब हम करते हैं इफ एल्स पे और लूप्स के ऊपर हम बात करते हैं. So very simple, इसको जो will get done with it very quickly. So we have the if conditions, then we have the for loop and while loop, and then we can bring in the structured, or we can just write functions and procedures. So let's start with if conditions. Very simple. So if condition goes Python में code होता है, you have if, then you have the condition here, you have the column, यहाँ पे आपका code आएगा, then you have, so this is one simple if condition, then you have if, then you have the condition, then you have the code, and then you can write else, and यहाँ पे आपका else का code आ जाएगा. So I'm just writing pass here instead. Pass is a Python keyword that simply means कि अभी यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना है, you write it afterwards. Okay, so here we have pass here as well. All right, so then we are only left with the one with multiple conditions. So यहाँ पे if, so if the condition is true, then we have elif. Okay, Python में सिर्फ एक ये न्यू चीज होगी कि आपके पास elif का कीवर्ड आएगा, not else if. So else if नहीं allowed आपको, आपने elif लिखना है. So you can have as many else as you want, and then you can just end at an else, or else is also optional, just like in pseudocode. Okay, so just a quick example. Let's say ask user to input a number and output if it is positive, negative, or 0. So हमने number input ले लेना, is equal to int input, enter number, and then we check if num is equal to 0, then we print 0. Then elif num is greater than 0, so we have print positive, and else we have print negative, like this. Okay, so if I run it now, and if I input 0, so it says 0, 12 positive, minus 5 negative. Okay, works perfectly. So if condition is if nothing else. So moving on to for loop now. So for loop runs the same way. Okay, so for loop runs the same way. You will have for I in range. ओके, अब यहाँ पे रेंज का फंक्शन जो है ये न्यू फंक्शन है. ओके, सो रेंज जो है ये आपको सर्टेन वैल्यूज के दरमियान में आपको वैल्यूज जनरेट करके देता है. सो फॉर आई यहाँ इन का कीवर्ड लास्ट में आएगा. इन रेंज यहाँ पे इफ यू राइट द एंडिंग नंबर, तो ये आपके जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपकी 0 से लेके एंड -1 तक चलेंगी. द रीजन इज कि पाइथन आपके 0 से स्टार्ट होता है. सो इफ यू राइट 5, दैट मीन्स प्रिंट द फर्स्ट 5 वैल्यूज विच आर 0 1 2 3 4. ठीक है, सो फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई. So ये आपको 0 1 2 प्रिंट कर देगा. Then we have, so I'll open it here as well. Okay, then we have the for I in range. इसमें आप
start run बता सकते हो. You can start from let's say 1 and you want to print the values till 5, so you'll go till 6. So this will go till 0 to 6, and then you can print the value of I, and it prints the values from 1 to 5. Also we can print the values in the same line. इसका जो Python syntax है ना, उसके लिए आपने end is equal to स्पेस लिख देना है ऐसे प्रिंट के अंदर कॉमा डाल के. सो दिस सिंपली मींस कि आपने एंड पे नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना, आपने सेम लाइन में रहना, एंड देन यू विल जस्ट पुट अ स्पेस. सो लाइक दिस. ठीक. बट अभी सारी चीजें एक ही लाइन में आउटपुट हो गई. सो इफ यू वांट टू ऐड अ लाइन ब्रेक इन बिटवीन देम, like I taught you yesterday, you can either use a slash n, or you can just write a blank print statement like this, and this will also create an empty line. Next line पे ले जाएगा. ठीक. सो ये बल्कि आपको पास पेपर में कुछ क्वेश्चंस भी नजर आएंगे P4 में जहाँ पे यूज होगा. ओके, सो यहाँ स्टार्टर एंड पे आप बता सकते हो, एंड देन यू आल्सो हैव दी so for loop till end, then this is for loop from start till end, and then we can also have the for loop with step function. So इसमें हम क्या करेंगे, for let's say z in range. अब यहाँ पे आप स्टेप बता सकते हो. let's say I want to start from 20, I want to go all the way till 30, so 31 तक, and मैंने हर दफा स्टेप को 5 करना है. So I want to change the value of my loop variable by 5. Okay, so if I print the value of z, तो ये देखो it should be, और अगर मैं इसको सेम लाइन में कर लूँ, end is equal to space, so ये एक ही लाइन बनेगा 10, 15, 20, 25, 30, and then I can print an empty line to go to the next time. ठीक है. And then I can also print the for loop in reverse, for loop in reverse order. So उसके लिए हम क्या करेंगे, we'll simply run for let's say j in range. अब आपने 30 से 0 तक आना है, और आपने हर दफा -1 करना है. सो इफ यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ j, अगेन अगर हम सेम लाइन में करें, आई विल रिड्यूस द वैल्यू ताकि एक लाइन में आ जाए. सो 5 4 3 2 1. अगेन 0 क्यों नहीं काउंट हुआ, क्योंकि दिस वैल्यू इज एक्सक्लूडेड. अगर आपको 0 भी इंक्लूड करना है तो आपको -1 तक जाना पड़ेगा. ठीक है. रेंज के फंक्शन में जो भी एंड वैल्यू होगी वो हमेशा एक्सक्लूड होगी. सो आपने उससे एक पीछे वाली वैल्यू तक जो वो आपका सारा आउटपुट जो वो आएगा. I hope everything's clear till this point. And yeah, so now using this, we can actually do a passive question जिसमें वो आपको कहता है कि आपने एक string को reverse करना है. So ask user to input a message and print its reversed version. Okay, so we'll ask the user कि वो input करे message, enter a message, and then I'm going to print it in reverse. ओके, अब इसको रिवर्स प्रिंट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना रिवर्स फॉर लूप चलाना है, और आपने हर कैरेक्टर को 1 बाय 1 जो है वो आउटपुट करते रहे. अब इसके लिए आपको वही सूडो कोड वाली टेक्निक्स है. सो पहले आपने एक न्यू स्ट्रिंग बनानी है, लेट्स कॉल इट रिवर्स्ड, और ये एम्प्टी होगी. फिर आपने एक फॉर लूप चलाना है फॉर लेट्स से ए इन रेंज. अब आपका जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वो आपकी लेंथ से लेके 0 तक आपने जाना है, रिवर्स ऑर्डर में जाना है. सो -1 स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, वी डोंट नो, बट वी नो कि एंडिंग आपकी -1 तक होगी. क्यों, क्योंकि 0th इंडेक्स भी आपने काउंट करना है. पाइथन में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं. यहाँ पे अब हम एलियन यूज करेंगे. सो आई विल जस्ट राइट एलियन ऑफ मैसेज. सो अब हम देखते हैं. अगेन अ गुड आइडिया वुड बी टू फर्स्ट मे बी साइज को सेव कर लें, एलियन ऑफ मैसेज, एंड वी कैन ऑलवेज जस्ट प्रिंट द साइज जस्ट सो दैट वी हैव अ गुड आइडिया. ओके, एंड अभी के लिए जस्ट लेट्स प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, और सेम लाइन में करते हैं, although it's not a requirement. So the message is computer science, and see it prints all the indices in reverse 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Looks good. Okay, but अब issue ये है कि आपका जो कॉम साइज में कितने कैरेक्टर्स हैं. अगर हम 0 से स्टार्ट करें, so it has 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7. So आप 7 से स्टार्ट करें, बट ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, राइट. सो वी हैव टू डू साइज -1 here. सो यहाँ पे हमने साइज को लेंथ -1 करना है ताकि आपके पास 0 से इंक्लूडेड इंडिसेस आए. ओके, इफ आई रन द लूप अगेन, it should output me all the values between, let's write Iron Man. So it gives you value between 7 till from 7 till 0. So this looks good. Now अब हमने क्या करना है, हमने इन इंडिसेस पे सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट कर देना है. अगर मैं इन वैल्यूज को प्रिंट करूं, so how do I get the current character? उसके लिए you simply need to access your string. So आपकी string पड़ी हुई है message में, and you can just print message at index a.
and I can print the character. और डायरेक्टली भी आप कर सकते हो. सो मैसेज इज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग एंड स्क्वेयर ब्रैकेट्स में ए इज द लूप वेरिएबल. तो आपकी वैल्यू जो है वो रिवर्स प्रिंट हो जाएगी. सो इफ आई राइट आयरन मैन इट सेज NAMNORI एंड ठीक है, ये इस तरह से वो आपका प्रिंट हो गया NAMNORI. सो ये रिवर्स में प्रिंट हो गया. ओके, इफ आई रिमूव दिस एंड तो ये आपका एम्प्टी लाइन नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा. लेट्स से फ्रांस लिख लेते हैं. सो अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रिंट हो रहा है. ठीक है, अब हमें लाइन बाय लाइन नहीं करना, हमें एक ही स्ट्रिंग के तौर पे इसको आउटपुट करना है. सो उसको करने के लिए वही सूडोकोड वाली जो लॉजिक थी कि जो रिवर्स के अंदर हम हर कैरेक्टर को जो वो अपेंड करते जाएंगे वन बाय वन. ओके, लेट्स ट्राई दैट. सो आपको कैरेक्टर मिला, आपने इसको अपनी रिवर्स में अपेंड कर दिया. रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स्ड, यहाँ पे एंड% नहीं आएगा, प्लस आएगा, प्लस कैरेक्टर, and that's it. And then you can print the reverse at the end, or this will be ditto pseudocode logic. So if I say Microsoft, so it prints it in reverse, and I can get rid of the size you want to print kiya hua. Then let's try another one. Let's say rock music, and yeah, this reverse हो गया.